Hi kids, welcome to the session. This is Himanshi Singh, your biology faculty at Biology with Himanshi. So we are going to continue with your chapter that is transport in plants. So we were talking about transport in plants. So far we have discussed about the different means of short distance transport. Now if I talk about this particular chapter kids, the chapter can be divided into three different parts. The first one that we have already covered which talks about the short distance transport. The next part talks about the plant-water relationship, over where we are going to discuss about the water potential, solute potential, pressure potential, osmosis, osmotic pressure, osmotic potential, diffusion pressure deficit, etc. Right? So there are so many terms that we have to discuss, and I think it's the most complicated and the confusing part of this particular chapter. So this is what we are going to start. Hence, the chapter is quite important. The session is very, very important because we are just going to start the plant-water relationship. Along with plant-water relationship, we are going to discuss about your osmosis today. Done? For the students who don't know me, this is Himanshi Singh, your biology faculty, having 5+ years of teaching experience, mentored and guided 10,000 plus students. The NEET biology score produced by one of my students, the best NEET biology score produced by one of my students is 340 out of 360, and I am CSIR NET JRF qualified. With this kids, coming to your homework question, yes, the main difference between the active and the passive transport across the cell membrane is, this was your homework question. So first option says we have to talk about the main difference, yes, between the active and the passive transport. So passive transport is non-selective, whereas active transport is selective. This statement is partially correct because when we talk about passive transport, it includes your simple diffusion. Along with simple diffusion, it talks about your facilitated diffusion as well. Now in facilitated diffusion, as there is involvement of proteins, yes, proteins are involved, hence the process becomes selective. The proteins are highly selective and choosy in nature. The next one is, so first statement is not correct. Next one is passive transport requires a concentration gradient across a biological membrane, whereas active transport requires energy to move solutes. This is correct for passive transport, which talks about simple diffusion and facilitated diffusion. A concentration gradient should already be present, right? It's not going to create the concentration gradient. What is going to happen is there will be movement of the molecules from higher concentration to lower concentration, right? So in this case, what is going to happen? The concentration gradient should already be present. Whereas when we talk about your active transport, जब हम active transport की बात करते हैं तो active transport में हमारे पास molecules move होते हैं against the concentration gradient. In active transport, molecules are moving against the concentration gradient. So they are moving from lower concentration to the higher concentration. Yes, which requires energy. So this seems to be the correct option. Next one, passive transport is confined to anionic carrier protein, whereas the active transport is confined to cationic channel protein. So it doesn't have anything to do with the charge of the ion, right? Next option, active transport occurs more rapidly than the passive transport. So this word rapidly doesn't mean faster. Yes, the word rapid doesn't mean faster. Rapid means that it is happening at a faster, amount. The amount of active transport is more in a cell in comparison to the simple passive diffusion or facilitated diffusion, which is wrong. If we talk about this statement, it can be partially correct if we are not going into the technicalities of the word rapid. But as the question is asking the main difference between active and the passive transport, the question is talking about the main difference. So talking about the main difference, the answer will be option 2. Yes, option 2 will be the correct answer. Passive transport requires a concentration gradient already, whereas in case of the active transport, energy is required to move the solutes, and this movement is uphill movement, which means
from lower concentration to higher concentration. Easy peasy lemon squeezy. Now, let's start with today's important lecture. So, talking about plant water relation. It's not just about the plant kit, but every living cell has a major amount of water inside it. The cytoplasm of a cell is mainly made up of water, right? Our body is water, majority of it. So water plays a very important role in all the living organisms. सारे living organisms के अंदर water बहुत important role play करता है. So water is essential for all physiological activities because majority of reactions, enzymatic reactions and metabolism is occurring inside the cytoplasm which requires water. जितने भी रिएक्शन हो रहे हैं सेल के अंदर सबके लिए वाटर चाहिए मेजॉरिटी ऑफ देम के लिए वाटर चाहिए है ना तो वाटर हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जो ऑर्गेनिज्म की फिजियोलॉजी को भी कंट्रोल करेगा हमने कम पानी पी लिया गर्मी हो रही है स्वेटिंग हो रही है बहुत ज्यादा राइट विल गो अंडर डिहाइड्रेशन बॉडी विल स्टॉप फंक्शनिंग एट इट्स बेस्ट है ना सो फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज रिक्वायर वाटर. Along with this, it provides the medium in which most of the substances are dissolved. Yes, sodium is present, there is presence of the calcium, there is presence of the sugar, glucose, etc. And all of them are going to get dissolved inside the water. So majority of components inside a cell, yes, majority of components inside the cell are dissolved inside water, which results in formation of cytoplasm. So protoplasm of the cell is water in which different molecules are dissolved and suspended. So all the protoplasm, including your cytoplasm, your nucleus, is nothing but water and different combination of molecules inside it. So these molecules are dissolved inside the water. Now talking about the plant, in case of plant, the water distribution is very vast because they are so tall heighted, yes. So we have long trees such as eucalyptus. यूकलिप्टस हमारे पास इतना लंबा सबसे लंबा एंजियोस्पर्म है राइट सो यहाँ पे हमारे पास बहुत ही ज्यादा लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट करना है अब ये लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट के लिए हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन के लिए कंडक्शन एलिमेंट्स प्रेजेंट है जैसे जाइलम और फ्लोएम conducting elements xylem and phloem are going to help in this long distance transport. Can anyone tell me what is this long distance transport also known as? Yes, we call it as translocation. So distribution of water within a plant varies. Woody part have relatively very little water. बहुत कम पानी present है woody part में whereas the soft part जैसे leaves हो गई, fruits हो गए, right? They are so watery in nature. A seed may appear dry. है ना हम लोगों ने peanuts खाए हैं everyone loves to eat peanuts so the peanuts or the dry fruits that we have they are seeds mainly now these seeds seem to be dry it looks like they do not have any water inside them but there is still presence of the water and this water helps in retaining the minimum physiological activities required for the cell to remain alive एक सेल को जिंदा रहने के लिए जितना भी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी करना है जितना मेटाबॉलिज्म रन करना है उतना पानी सेल के अंदर हमेशा प्रेजेंट होगा चाहे वो एक सीड ही क्यों ना हो राइट इवन वुड के अंदर पानी प्रेजेंट होता है वो पानी हमें दिखाई नहीं देता बिल्कुल ड्राई दिखाई देती है वुड बट वुड के अंदर भी वाटर प्रेजेंट है नाउ मूविंग फॉरवर्ड terrestrial plants take up a huge amount of water daily and most of it is lost in the air through evaporation और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं ट्रांसपीरेशन तो ट्रांसपीरेशन बेटा बेसिकली क्या है लॉस ऑफ वाटर in the form of vapors yes वाटर हमारे पास वेपर्स के फॉर्म में बाहर निकलेगा प्लांट की बॉडी से तो हम इसको क्या बोल देंगे ट्रांसपीरेशन so this transpiration is going to remove almost 98% of water absorbed by the plant अगर प्लांट ने 100 लीटर पानी अब्सॉर्ब किया तो उसमें से 98 लीटर पानी बाहर निकल जाएगा विच मीन्स प्लांट एक्चुअली में कितना यूज कर पाएगा सिर्फ 2% राइट इट्स एन एवरेज डेटा कि इतना पानी हमारे पास यूज होता So, water is often limiting factor for the plant growth and productivity in both agricultural and natural environment. हर जगह पे हमारे पास पानी क्या है स्कार्सिटी में रहेगा क्योंकि
रिक्वायरमेंट जो है पानी की वो बहुत ज्यादा है, प्लांट को बहुत ज्यादा अमाउंट में वाटर चाहिए। देर आर टू एग्जाम्पल्स गिवन इन योर एनसीईआरटी। सबसे पहला हमारे पास कॉर्न प्लांट है। सो दिस कॉर्न प्लांट अब्सॉर्ब्स ऑलमोस्ट 3 लीटर ऑफ वाटर इन अ डे। 3 लीटर पानी ये अब्सॉर्ब करता है। मस्टर्ड प्लांट इज गोइंग टू अब्सॉर्ब वाटर इक्वल टू इट्स ओन वेट इन अबाउट 5 आवर्स। 5 घंटों में वो इतना पानी अब्सॉर्ब कर लेगा जितना उसका खुद का वेट है। राइट, नॉट ओनली दिस, वी हैव वाटरमेलन, है ना, हम सबने वाटरमेलन खाया है। वाटरमेलन इज व्हाट, वाटर, इसलिए तुम उसको वाटरमेलन बोलते हैं क्योंकि उसके अंदर मेजर कंपोनेंट क्या है, वाटर है। चलो, नाउ अ प्लांट सेल इज सराउंडेड बाय द सेल मेम्ब्रेन एंड अ सेल वॉल। ये जो सेल वॉल होती है कैसी होती है बच्चा, कंप्लीटली परमिएबल, राइट। मतलब जैसे मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, कंप्लीटली परमिएबल का मतलब क्या होगा, उसे कोई मतलब नहीं है कौन सेल के अंदर आ रहा है कौन बाहर जा रहा है। शी इज फ्री, राइट, शी इज गोइंग टू अलाउ द एंट्री ऑफ एवरी मॉलिक्यूल, शी इज नॉट गोइंग टू रेगुलेट द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ द मॉलिक्यूल, इट्स completely permeable. She is not going to regulate anything, whereas the cell membrane is going to be your selectively permeable, and the selective nature is going to come because of the lipids and proteins. So selectively permeable. ठीक है, तो selectively permeable cell membrane present होगी. The cell wall is freely permeable to water and substance in solution, hence not a barrier to movement. तो सेल वॉल कभी भी किसी को नहीं रोकेगा, सेल वॉल के थ्रू पानी आराम से आ सकता है, पानी के अंदर जो भी चीज डिजोल्व है इजीली मूव कर सकती है। सो एज यू कैन सी, देखो सेल वॉल के अंदर अंदर हमारे पास मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे हैं, राइट, वाटर का मूवमेंट हो रहा है सेल वॉल के अंदर, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू भी हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन होगा। चलो, अब हमारे पास वर्ड आ जाता है ऑस्मोसिस। यहां तक अगर किसी को कोई डाउट है, ड्रॉप इट इन द कमेंट सेक्शन। अब हमारे पास वर्ड आ जाता है ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस। In simple language, if I talk about osmosis, osmosis is diffusion of water, or we can call it as solvent. देखो हमारे पास एक मिक्सचर होता है, इतना तो आप लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ा हुआ है, मिक्सचर होता है, मिक्सचर में होता है सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। जैसे हमने क्या किया, हमने सॉल्यूट ले लिया शुगर, और शुगर को हमने किस में ऐड कर दिया, वाटर के अंदर, है ना, तो ये हमारे पास मिक्सचर बन गया। अब ऑस्मोसिस की जब हम बात करते हैं ना बच्चे, सो देयर आर टू स्पेसिफिक कंडीशंस व्हेनेवर वी आर टॉकिंग अबाउट ऑस्मोसिस। दो स्पेसिफिक कंडीशन आ जाएगी। एक, हमारे पास जो मूवमेंट हो रहा है वो मूवमेंट सिर्फ और सिर्फ वाटर का हो रहा है, मतलब सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स मूव करेंगे, पर कैसे मूव करेंगे, दे आर गोइंग टू मूव थ्रू, सबसे पहली चीज सॉल्वेंट डिफ्यूजन हो रहा है, ठीक है, सॉल्वेंट डिफ्यूजन हो रहा है। उसके अलावा दूसरी चीज क्या है, थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। किसके थ्रू, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू हमारे पास क्या होगा, मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट होगा, इसे हम क्या बोलेंगे, ऑस्मोसिस। सो ऑस्मोसिस इज गोइंग टू हैव टू स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स। जब भी हम ऑस्मोसिस वर्ड का यूज करेंगे, सो देयर इज movement of water or the solvent molecules through a semi permeable membrane. Clear? तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू वाटर का मूवमेंट होगा। ऑस्मोसिस इज टर्म यूज्ड टू रेफर स्पेसिफिकली टू द डिफ्यूजन ऑफ वाटर, सबसे पहली चीज, अक्रॉस अ डिफरेंशियली और सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। तो एक परमिएबल मेम्ब्रेन, एक सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, डिफरेंशियली परमिएबल मेम्ब्रेन, जो वाटर मॉलिक्यूल्स को मूव करने में हेल्प करेगा, वहां से मूवमेंट होगा वाटर का, तो हम इसे ऑस्मोसिस बोलेंगे, ठीक है। अब ऑस्मोसिस मैंने बोला कि सिंपल डिफ्यूजन है, तो ये क्या हमारे पास सिंपल डिफ्यूजन है। डिफ्यूजन की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है बच्चा, हमारे पास डिफ्यूजन में मॉलिक्यूल्स हमारे पास मूव करेंगे अलोंग द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, यस। इसके अलावा हमारे पास ये एक पैसिव मूवमेंट होता है। डज इट रिक्वायर्स एनर्जी, नो, नो एनर्जी इज रिक्वायर्ड। So these two characteristics of diffusion are applicable on osmosis. ये दोनों के दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स ऑस्मोसिस के ऊपर एप्लीकेबल होंगे, दैट इट इज अलोंग द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। द वाटर मॉलिक्यूल्स आर गोइंग टू मूव फ्रॉम देयर हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, राइट।
Next thing, it's a passive process, no energy will be required. So the concentration of the water is highest when there are no solutes present, and it keeps decreasing as more and more solute is added. अब इस स्टेटमेंट का क्या मतलब है, इसको समझते हैं. अगर आपको ये समझ में आ जाएगा तो पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा. देखो, हमारे पास ये एक बीकर है, बीकर के अंदर हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल्स आ गए. ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 तो ये वाटर मॉलिक्यूल्स ना एकदम फ्री है, किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं. दे आर फ्री टू मूव इन एनी डायरेक्शन, जिसका जहां मन कर रहा है वो वहां पे जा रहे हैं. ठीक है, अब हमारे पास दूसरा बीकर आ गया. लेट्स ड्रॉ अनदर बीकर. इस बीकर में हमने क्या किया बेटा, वाटर मॉलिक्यूल्स तो हमारे पास थे ही, वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ साथ हमने शुगर मॉलिक्यूल्स को ऐड कर दिया. तो अब ऐसे में क्या होगा बच्चे, जैसे ही शुगर मॉलिक्यूल आएगा तो वाटर मॉलिक्यूल्स उसके साथ इंटरैक्ट करना शुरू कर देंगे. अब इसको ऐसे इमेजिन कर लो कि पहले हम डायग्राम बना लेते हैं. तो इस तरीके से हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल्स क्या करने लगे, इंटरैक्शन करने लगे. अब ऐसे मान लो कि ये वाटर मॉलिक्यूल्स तो तुम हो. यस, दिस इज यू, एंड अलोंग विद दिस इज लेट्स से शाहरुख खान, और मे बी दीपिका पादुकोण, और मे बी कैटरीना कैफ, व्हाट्सएवर यू वांट, राइट. सो दिस इज योर SRK. ठीक है, अब बेटा शाहरुख खान तुम्हारे आसपास आएगा तो तुमने क्या करना है, ओह शाहरुख खान, ओ माय गॉड, है ना. तो हम क्या करेंगे, वहां पे गैदर कर लेंगे, उसके आसपास जमा हो जाएंगे, चिल्लाएंगे शाहरुख खान शाहरुख खान. नो, यू आर नॉट फ्री, है ना. तो वहां पे खड़े हो गए, उसको देख रहे हो, उसके साथ इंटरेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो, तो यहाँ पे तुम फ्री नहीं हो. सो दीज वाटर मॉलिक्यूल्स आर एंगेज राइट नाउ. ये जो वाटर मॉलिक्यूल्स है कैसे हैं, एंगेज्ड हो गए हैं, एंगेज्ड वाटर मॉलिक्यूल, विच मीन्स दे आर नॉट फ्री, नॉट अवेलेबल फॉर मूवमेंट. दे आर नॉट अवेलेबल फॉर मूवमेंट. ठीक है, ये मूवमेंट के लिए अवेलेबल नहीं है, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा हमारे पास, डू नॉट पार्टिसिपेट इन डिफ्यूजन. यस, सो बेटा शाहरुख खान आ जाएगा तो तुम उसके आसपास लग जाओगे, है ना. तो तुम फ्री नहीं हो, अब तुम मूव नहीं कर सकते. पहले तुम अपनी शॉपिंग कर रहे थे, अब तुम अपनी शॉपिंग वॉपिंग छोड़ के सिर्फ शाहरुख खान को देख रहे हो. ठीक है, सो दिस इज द कंसेप्ट. सो द वाटर मॉलिक्यूल्स आर एंगेज्ड विद द सॉल्यूट मॉलिक्यूल, है ना. तो सॉल्यूट मॉलिक्यूल आ गया और ये हमारे पास आ गया सॉल्वेंट. सो पहले सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स अवेलेबल थे. Now the solvent molecules are not available for any movement, so they are not going to participate in the process of diffusion, और in simple word osmosis में help नहीं करेंगे, osmosis में participate नहीं करेंगे. ठीक है, समझ में आया concept? So this is what we are talking about. The statement is saying the concentration of the water is highest when there is no solute present, है ना. तो कॉन्सेंट्रेशन का मतलब क्या हो गया, जस्ट रिमेंबर और अंडरस्टैंड दिस वन एज योर फ्री वाटर मॉलिक्यूल. फ्री वाटर मॉलिक्यूल, फ्री वाटर molecules that can participate in the process of osmosis. Yes, so the concentration of the free water molecule is highest when there is no solute present, but it keeps on decreasing as more solute is added. अब मान लेते हैं कि किसी को शाहरुख खान पसंद नहीं है, पर उसको दीपिका पादुकोण पसंद है, तो वहां पे दीपिका पादुकोण भी आई है ना. अब हमने सॉल्यूट बढ़ा दिया, तो जिसको शाहरुख खान नहीं पसंद था वो दीपिका पादुकोण को देखने के लिए खड़ा हुआ है, वहां पे बातें कर रहा है, कोशिश कर रहा है, हाय दीपिका, राइट. तो ये हमारे पास कंसेप्ट है. सो एज वी आर गोइंग टू free water molecules are highest in pure water. ठीक है, प्योर वाटर में हाईएस्ट है, तो इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पे क्या प्रेजेंट होगी बच्चा, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी. मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी मींस दे विल बी फास्टर डिफ्यूजन. ठीक है, यहाँ पे फास्टर डिफ्यूजन होगा. दूसरी चीज क्या होगा यहाँ पे बच्चे हमारे पास, कि यहाँ पे हमारे पास है solute, right? So solute decreases the number or amount
of free water molecule of free water molecules फ्री वाटर मॉलिक्यूल्स को कम कर देगा जिसकी वजह से हमारे पास क्या हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी विल डिक्रीज as the kinetic energy is going to decrease the rate of diffusion will also decrease the rate of diffusion also decreases right पहले हमारे पास बहुत सारे water molecules थे they were free water molecules for the movement the rate of diffusion was faster but as solutes are going to add जैसे जैसे solutes आते जाएंगे the amount of the free water molecules is going to decrease the kinetic energy will also decrease hence the rate of diffusion will decrease ठीक है ये kinetic energy हमारे पास क्या हो जाएगी कम हो जाएगी clear to everyone चलिए So osmosis occurs spontaneously because it is diffusion. It will occur spontaneously अपने आप होगा. In response to a driving force, the net direction or the rate of osmosis depend upon both pressure gradient and concentration gradient. अब दो चीजें हैं कि हमारे पास वाटर का मूवमेंट किस डायरेक्शन में होगा ये दो चीजों के ऊपर डिपेंड करता है प्रेशर ग्रेडियंट और कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के ऊपर सो देयर आर टू फैक्टर्स ऑन व्हिच द डायरेक्शन of osmosis is going to vary. First one is pressure gradient, second one is concentration gradient. Concentration gradient is simple. The molecules will move from higher concentration to lower concentration. That is your along the concentration gradient, along the concentration gradient, or simply we can call it as downhill movement. ठीक है नेक्स्ट हमारे पास आ गया बच्चा प्रेशर ग्रेडियंट सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दिस प्रेशर ग्रेडियंट इन अ लिटिल डिटेल ओके सो लेट्स मूव फॉरवर्ड नाउ बिफोर वी टॉक अबाउट द प्रेशर ग्रेडियंट in detail let's talk about something that is very important that is tonicity टोनोसिटी को डिस्कस करने से पहले एक बहुत जरूरी चीज है सबसे पहली और इंपॉर्टेंट चीज जो आपको याद रखनी है वो ये कि टोनोसिटी एक कंपैरेटिव वर्ड है मैम बहुत अच्छा पढ़ाती हैं इन कंपैरिजन टू डैश टीचर या मैम बहुत बेकार पढ़ाती हैं इन कंपैरिजन टू डैश टीचर तो हम कंपैरिजन कर रहे हैं है ना यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कंपैरिजन कर रहे हैं तो टोनोसिटी हमारे पास क्या है एक कंपैरेटिव वर्ड है कंपैरेटिव वर्ड ठीक है यहाँ पे हम कंपैरिजन कर रहे हैं किसका कंपैरिजन कर रहे हैं सॉल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन का कंपैरिजन कर रहे हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट अब ये याद रखना कि सॉल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन देख रहे हैं वाटर की कॉन्सेंट्रेशन नहीं देख रहे सॉल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन देख रहे ठीक है सो व्हाट इज गोइंग टू हैपन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूट मे वेरी इनसाइड द सेल एंड आउटसाइड द सेल सेल के अंदर किस कॉन्सेंट्रेशन में सॉल्यूट है और बाहर किस कॉन्सेंट्रेशन में सॉल्यूट है वो डिपेंड कर सकता है जैसे बेटा आप मॉल के अंदर घूम रहे थे ये आपका क्या आ गया मॉल आ गया मॉल के अंदर एसआर के आ गया अब एसआर के आ गया मॉल के अंदर तो मॉल बेसिकली हमारे पास क्या है सेल सेल के अंदर क्या आ गया सॉल्यूट आ गया सेल के अंदर सॉल्यूट आ गया उसके बाहर की जो सराउंडिंग है वो कैसी है फ्री है राइट तो ये हमारे पास क्या हो गया सराउंडिंग हो गया अब सराउंडिंग में कुछ भी नहीं है तो आप मुझे बताओ फ्री वाटर मॉलिक्यूल्स कहाँ पे प्रेजेंट होंगे ज्यादा सेल के अंदर या सेल के बाहर free water molecules in which condition we are going to find more free water molecules inside the cell or outside the cell so certainly outside the cell is going to have more free molecules it is going to have more free molecules whereas when we talk about inside the cell there will be less free water molecules and now even without discussing the concepts of solute concentration and pressure gradient you can give me the answer है ना तुम लोग मुझे बता सकते हो कि पानी कहाँ से कहाँ मूव करेगा जल्दी से देख के बताओ सेल के अंदर कम वाटर मॉलिक्यूल्स हैं सेल के बाहर ज्यादा फ्री वाटर मॉलिक्यूल्स हैं तो वाटर कहाँ से कहाँ मूव करेगा देखो यहाँ पे हमारे पास बाहर ज्यादा फ्री मॉलिक्यूल्स है बाहर ज्यादा फ्री मॉलिक्यूल्स है मतलब क्या प्रेजेंट होगी मोर काइनेटिक एनर्जी मतलब यहाँ पे क्या होगा मोर डिफ्यूजन मतलब वाटर मॉलिक्यूल ज्यादा मूव करेंगे
यहाँ पे कम वाटर मॉलिक्यूल्स हैं तो यहाँ पे लेस काइनेटिक एनर्जी होगी, मतलब लेस डिफ्यूजन होगा, तो बाहर से वाटर मॉलिक्यूल सेल के अंदर मूव करेंगे। इजी पीजी लेमन स्क्वीजी, है ना। बाहर ज्यादा फ्री मॉलिक्यूल्स थे, देयर वर मोर फ्री मॉलिक्यूल्स इन द आउटसाइड, राइट, इन द सराउंडिंग्स, and these free water molecules will move inside the cell. So solute, the concentration of the solute may be different inside a cell and in the surrounding of the cell. The tonicity of a solution refers to the difference in the solute concentration. Please remember, it talks about solute concentration of the cell with respect to its surrounding. सेल का उसके सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में सॉल्यूट की क्या कॉन्सेंट्रेशन है, इसको हम टोनोसिटी बोलते हैं। ठीक है, लेट्स डिस्कस टोनोसिटी इन डिटेल। Okay, so moving forward, now we are going to discuss about the causes of osmosis, right? So tonicity actually results in osmosis because there is difference in the solute concentration. There are three different types of tonicity. So talking about tonicity, tonicity is a comparative term, kids, yes. So the first condition is when the cell is surrounded by a solution which has less solutes, right? Solution is having less solutes, whereas the cell has more solutes, right? The cell have more solutes. In this case, kids, can you guys tell me in which direction the water will move? Yes, the solution is having less solutes and the cell have more solutes. More solute means that there is presence of less free water, whereas less solute means that there is presence of more free water. So the direction of the water movement, the water will move. Yes, the water will move from outside to inside the cell. That's it. Yes, so the water will move into the cell. In this condition, the cell is hypertonic. Yes, tonic means that we are talking about the tonicity, and hyper, the word hyper, यार तू तो बहुत hyper होता है, यार इतना hyper नहीं होता, why are you getting so hyper, right? So hyper is the word which means more, excessive. So there is excess or more concentration of what? Concentration of solute. More concentration of solute, because tonicity talks about the difference in the concentration of solute. Tonicity किसकी बात करिए? Difference in the concentration of solute. तो यहाँ पे हमारे पास solute की concentration ज्यादा होगी. Solute की concentration ज्यादा होगी. We are going to call it as hypertonic solution. More solute concentration, the solution is known as hypertonic solution. So if the cell is surrounded, this is first condition where the cell is surrounded by hypotonic solution. Now here comes two different words. In the same condition, I am using two different words so that you guys are clear about how to understand or interpret your question. In this case, I am calling the cell. Cell is hypertonic. Another one word is surrounding. Surrounding is hypotonic. Hypotonic means hypo. Hypo means less. Hypo means less. So there is less concentration of solute. As we are saying that tonicity is a comparative term, right? It's a difference between the concentration of solute. So certainly one of them is going to be higher, another one is going to be lower. The one with the higher solute concentration is known as hypertonic. Another one with the less solute concentration is known as hypotonic. So if the cell is hypertonic, the outer concentration will be hypotonic. Easy peasy, समझ आ रहा है? अगर सेल हाइपर है तो उसके बाहर का सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा? हाइपो हो जाएगा, है ना? आप
आप भीड़ वाले एरिया में हो तो वो तो भीड़ हो गई, और बाहर क्या हो गया, कम भीड़ हो गई। तो हमारे पास अंदर जहाँ पे ज्यादा सॉल्यूट है वो हो गया हाइपरटोनिक, और जो बाहर की कंडीशन है जहाँ पे कम सॉल्यूट है वो हो गया हाइपोटोनिक। I hope it's clear to you guys. Because tonicity is a comparative term, we can use hypotonic and hypertonic term in one single condition. Another condition is that the cell is surrounded by hypertonic solution. Now you guys are going to help me with this. So cell is surrounded by hypertonic solution. So what should I write for the solution outside? It is hypertonic. Hypertonic means, kids, there will be presence of higher concentration of solutes. Yes or no? More concentration of solute means lesser concentration of free water molecule. Yes, free water molecules are less. In this condition, if we talk about the cell, let's use another color. Yes, so if we talk about the cell is having less solutes. Less solute means that there will be presence of higher free water, and hence the water molecules will move. Sorry, the water molecules will move outside the cell. Just a second, kids. Yes, so in this condition, what is going to happen? The water will move outside the cell, right? The water will move outside the cell. So water moves outside the cell, right? So cell is having less solutes, which means there is presence of more free water, and the cell can be called as hypotonic. Yes, cell can be called as hypotonic. So no matter where the higher, no matter if the cell is hypertonic or hypotonic, the water always flows. Water always flows from hypotonic to hypertonic solution. Okay? Look at the statement, what I have written, try to understand it, and in case if you guys have any doubts, please do let me know. So yes, kids, I hope it is clear to you guys that the water always moves from the hypotonic to hypertonic condition. So hypotonic, let me explain it once again. Hypo means less solutes, which means more free water, and it means more kinetic energy, which means more diffusion, right? Whereas hyper means more solute, which means less free water, and it means less kinetic energy, means less diffusion. So the water will move from higher diffusion area to less diffusion, right? The water will move from this to this. That's all. I hope it's clear to everyone now. Let's move back to what we were discussing. Yes, so this is tonicity. So with respect to tonicity or difference in the solute concentration, there can be three different kinds of instance between a cell and its surrounding. Isotonic. Iso. What does the word iso means? Iso means same. Yes. So they are going to have same concentration of solute inside the cell and outside the cell. Both of them are going to have the same solute concentration. This is isotonic. So the solute concentration is similar in the cell and its surrounding. Next one is hypotonic. Hypotonic means that the solute concentration inside a cell is higher than its surrounding. Now, according to these terms, this is about the solution in which the cell is present.
Cell is present in isotonic condition. Cell is present in isotonic condition, which means that the outer surrounding solution is isotonic. Cell is present in hypotonic solution, which means that the surrounding is going to be hypo. So cell is solute concentration inside a cell is higher than its surrounding. So surrounding is hypotonic. Next one is hypertonic. Solute concentration inside the cell is lower than the surrounding. So 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. बहुत सारे solutes present है, right? Whereas in this condition, the cell is hypertonic, cell is having more solutes in comparison to the outside. And in this condition, both of them are going to have equal amount or equal concentration of the solutes. So diffusion and osmosis, there is a comparison between diffusion and osmosis. क्या differences present है diffusion और osmosis में, the minute difference. So as mentioned earlier, osmosis is a special case of diffusion. Osmosis diffusion ही है. Osmosis is diffusion, but it is a special case of diffusion. Though both involve the movement of substance down the gradient, yes, both of them are going to have down the gradient movement. There are some features that are unique to osmosis. Two of them are clear to you guys. First one, there is diffusion of only solvent. Second one, it is through a differentially or semi-permeable membrane. So it refers to the movement of only water, or we can call solvent molecules. डिफ्यूजन ऑफ सॉलिड इज नॉट ऑस्मोसिस. अगर सॉलिड मूव करेगा इधर से उधर तो मुझे ऑस्मोसिस नहीं बोलेंगे. It will occur through a semi-permeable membrane which does not allow the solute molecules to pass. So the solutes are not going to move through the membrane, only the water molecule or the solvent is going to pass. And it is driven by the osmotic potential or osmotic pressure. So osmotic potential or osmotic pressure क्या होता है? Let's talk about them. So osmotic potential, first thing is osmotic potential. So potential of the water molecule to move from hypotonic solution to a hypertonic solution is called osmotic potential. Now, potential means power और ability, है ना? Potential का मतलब क्या होगा कि इसकी कितनी potential है ये काम करने की. And this is going to happen because of the kinetic energy of molecule. क्या कह रही हूं मैं? Potential of the water to move from a hypotonic condition to hypertonic condition is because of its kinetic energy. Water molecule hypo से hyper condition में जाएगा because of its kinetic energy. Simple. So kinetic energy क्या करेगी बच्चा? Osmotic potential को decide करेगी. So osmotic potential is due to kinetic energy. ये सारे ना ऐसे कुछ hidden informations है. The way I teach you guys transport in plant, specifically this portion of plant water relationship, I try to make it as simple as possible by going into the depth of the concept कि भाई हमारे पास actually में क्या हो रहा है. जो हम osmotic potential बोल रहे हैं तो बस ये नहीं है कि एक driving force है. वो force बन क्यों रहा है, किस वजह से force बन रहा है, how the force is created is important. If you are going to connect everything to the kinetic energy of the molecule, entire chapter will become simple. सिर्फ kinetic energy समझ में आनी चाहिए molecule की, तो आपके पास पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा. If you guys are hooting and shouting towards Shah Rukh Khan, you're interacting with Shah Rukh Khan, certainly your energy is going to decrease, isn't it? So same thing is going to happen over here. This is your solute molecule, and once the solute molecule is surrounded by the solvent, right? The solvent is going to interact with the solute. So the solvent, now the kinetic energy due to interaction, the kinetic energy of solvent decreases. Yes, the kinetic energy of the solvent, not only of the solvent but of the solute as well. But we are interested in solvent. Right? The concentration of the solvent will, this kinetic energy of the solvent will decrease, है ना?
तो दोनों की एनर्जी कम हो रही है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों की एनर्जी कम हो रही है, बट हमें किस में इंटरेस्ट है? वी आर इंटरेस्टेड इन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ सॉल्वेंट। दैट्स इट, सिंपल। तुम्हारी एनर्जी कम हो जाएगी, तुम शाहरुख खान के पास जाओगे, चिल्लाओगे, चीखोगे, ओ माय गॉड शाहरुख खान, ठीक है, तो तुम्हारी एनर्जी कम हो जाएगी। दैट्स ऑल। चलो और डिटेल में पढ़ लेते हैं। फिर नेक्स्ट हमारे पास आ गया ऑस्मोटिक प्रेशर। देखो पोटेंशियल क्या हो गया? काइनेटिक एनर्जी की वजह से जो मूवमेंट करने की पोटेंशियल है, एबिलिटी है, उसको हमने ऑस्मोटिक पोटेंशियल बोला। तो ऑस्मोटिक पोटेंशियल क्या कर रहा है बेटा? इट कॉजेज ऑस्मोसिस, ठीक है, ये ऑस्मोसिस कॉज करता है। इट इज गोइंग टू कॉज ऑस्मोसिस, इसी की वजह से ऑस्मोसिस हो रहा है, क्योंकि मॉलिक्यूल्स के पास काइनेटिक एनर्जी है। दूसरा फैक्टर आ गया ऑस्मोटिक प्रेशर। तो जब भी आप ओपी देखोगे तो ओपी का मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर है, ना कि ऑस्मोटिक पोटेंशियल। क्या है? ऑस्मोटिक प्रेशर। सो द हाइपोटोनिक सॉल्यूशन एक्सपीरियंस प्रेशर टू गिव वाटर विच इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर। अब इसके ऊपर भी प्रेशर है कि भैया तुम पानी दो, उसी प्रेशर को हम क्या बोल रहे हैं? ऑस्मोटिक प्रेशर। बेसिकली जो हाइपरटोनिक सोल्यूशन है, क्योंकि उसके पास फ्री वाटर मॉलिक्यूल्स कम है, तो वो वाटर को खींचेगा अपनी तरफ। इट इज गोइंग टू पुल द वाटर टूवर्ड्स इटसेल्फ। Hypertonic solution is going to pull the water towards itself, and that pull is known as osmotic pressure. I'm going to repeat it once again. Hypertonic solution is going to pull the water towards itself. This is known as osmotic pressure. Hypertonic solution अपनी तरफ पानी को खींचेगा, जिसे हम क्या बोलते हैं? osmotic pressure. That's it. So it is numerically equal to osmotic potential. जितना प्रेशर होगा उतना ही पानी आएगा, तो दोनों की वैल्यू इक्वल होती है, बस उसका डायरेक्शन अलग अलग हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। So it is numerically equal to osmotic potential because hypotonic solution can give exact same amount of the water the hypertonic solution can take in. तुम्हें 100 रुपए चाहिए तो तुम्हें 100 रुपए ही मिलेंगे। Yes, if you guys want to have 100 rupee, you're going to get only 100 rupees, not more than that. Yeah, if you're going to create a pressure for 1000 rupees, you might get 1000 rupees. Yes. Okay. Now this is a demonstration from your NCRT, right? So it talks about the osmotic pressure. Basically, what is going to happen in this scenario? You can see that there is presence of 10% sugar solution, है ना? हमारे पास 10% sugar solution present है. There is semi-permeable membrane and pure water. Okay, quickly tell me, pure water is hypotonic or hypertonic? Pure water is hypotonic or hypertonic? Certainly it is hypotonic. So the water will move inside the funnel. Yes. So it will enter inside the funnel and the water level is going to increase. यहाँ से water level increase होता चला जाएगा. Now in the next condition, because we are keeping 1 kg load, which means we are giving external pressure. External pressure. हम क्या दे रहे बेटा? External pressure दे रहे. Now the water, first of all, the water was entering inside the funnel, right? Now because of the external pressure, what is going to happen? Now what is going to happen? Instead of entering inside the cell, the water will start coming outside the funnel. Though inside the funnel it is hypertonic and outside the funnel it is hypotonic. Ideally the water should move from hypotonic to hypertonic. एक रियल और नॉर्मल सिनेरियो में वाटर कहां से कहां मूव करता? बाहर से अंदर जाता, राइट? हाइपोटोनिक से हाइपरटोनिक में जाता. बट बिकॉज ऑफ दिस एक्सटर्नल प्रेशर, दैट इज ऑस्मोटिक प्रेशर, what is going to happen? The water will start coming outside. Now there will be a point where there will be no movement of water. There will be a point where there is no movement of water molecule, no movement of water molecules, and this pressure is known as what are we going to call this pressure as? This pressure is known as osmotic pressure.
This is how we measure osmotic pressure. So this is a experiment to determine osmotic pressure. The value of osmotic pressure. कितना वैल्यू है, कितने किलो कितना हमारे पास प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा. दैट इज द कंसेप्ट. ठीक है. सो बेसिकली हम लोगों के पास एक पॉइंट ऐसा आ जाएगा, हम जब एक्सटर्नल प्रेशर लगाएंगे, this external pressure is going to stop the process of osmosis, and that value of the pressure is known as osmotic pressure. So osmotic pressure आपके पास प्रोसेस को रोकता है, osmosis को रोकता है. So osmotic pressure forces the hypotonic solution to give water. So if we want osmosis not to happen, कि osmosis ना हो, an external and equal pressure on the hypertonic solution which is equal to the osmotic pressure to stop the water entry. अब ये वही बात है जो मैंने अभी आपको समझाई. We are going to give the equal and opposite pressure. External pressure देंगे ताकि osmosis रुक जाए. That value will be equal to osmotic pressure. Okay, now this is a very important flow chart. So सबसे पहली चीज हमारे पास क्या होगी बच्चा, देखो हमने सॉल्यूट ऐड किया. जैसे ही हम सॉल्यूट को ऐड करेंगे the solution will become hypertonic. Hypertonic solution means that there will be less free water. Yes, less free water molecules, because of which the osmotic potential is going to increase. Osmotic potential हमारे पास बढ़ जाएगा. ठीक है. More osmosis is required to reach equilibrium. ज्यादा osmosis होगा. बाहर का solution हमारे पास hypo है, अंदर ज्यादा hyper हो गया. More pressure is also required to stop this osmosis. Osmosis रोकना पड़ेगा. And the osmotic pressure also increases. तो basically यहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा है? Let's take a empty slide. Just a second. Oh, where are we? Just a second. Okay, something went wrong. Okay, let me try to explain it right over here. So what is going to happen, kids? Yeah, where were we? Okay, if we are going to add more solutes, the solution will become hypertonic. Basically, this osmotic potential is going to increase because there is increase in difference, increase in strength of concentration gradient. Concentration gradient बढ़ जाएगा, जिसका मतलब आपके पास osmotic potential बढ़ जाएगा, and there will be more osmotic pressure required to stop the process. जितना solute होगा उतना ही ज्यादा osmotic potential बढ़ेगा. जितना ज्यादा osmotic potential बढ़ेगा उतना ही ज्यादा osmotic pressure बढ़ेगा. More solute, more osmotic potential, more osmotic pressure. Clear? So now with this, finally we are having your quiz time. I hope it is clear to you guys. In case if you guys have any doubts in this particular slide or any concept of osmosis, tonicity, please do let me know and drop your doubts in the comment section. Now with this, we are going to have your quiz. All the best to everyone. And with this, we are going to have your quiz. Fine. So here comes your first question. The value of the osmotic potential of an electrolyte is always. Electrolyte is something that you guys must have gone through in your chemistry. But for your further explanation, electrolyte, for example, like Na plus Cl minus NaCl, salt. Something that is going to dissolve in the water in the form of sodium and calcium ion. Yes, kids. So the answer is more than electrolyte. Why? So osmotic potential of an electrolyte is always more than a non-electrolyte. Electrolyte basically breaks into
specific components or solutes. Basically, let's say there were 10 mole of sodium NaCl, right? As we are going to add it inside the water, right? As we are going to dissolve it in water. Now, what is going to happen inside the water? There will be 10 mole of Na, 10 mole of Na, and 10 mole of Cl ions, right? So the concentration of the solute actually doubles. The solute doubles, because of which the osmotic potential will also increase. More osmotic potential. More osmotic potential means higher OP, that is osmotic pressure. Okay kids, so ये OP क्या है आपके पास? Osmotic potential. Let's move to the next question. Osmosis is a type of imbibition of solution, diffusion of solvent, evaporation of water, diffusion of solute. Easy peasy lemon squeezy. Quickly give me the answer. Easy peasy lemon squeezy. Okay, so let's see what's the correct answer, and the correct answer is diffusion of solvent or simply water molecule. इसके साथ बच्चों, here comes your homework question. So here's the homework question. Which of the following statement is incorrect? Read the question carefully and give me the answer in the comment section. Okay, kids, so with this, thank you so much for this amazing session. And with this, kids, let me tell you, in the next class, we are going to continue discussing these concepts. We are going to talk about water potential, solute potential, and pressure potential. In case if you guys have any doubts from this lecture, drop it in the comment section. If you have any suggestion, drop it in the comment section. Feel free, it's your ma'am, तुम्हारी दोस्त है, ठीक है? So thank you so much, kids. With this, always keep on smiling. Don't forget to read your NCRT. Bye bye.